विकसित भारत 2047. Introduction. What is Viksit Bharat 2047? Viksit Bharat 2047 is a long-term vision by the Government of India to transform the country into a fully developed nation by the year 2047. This means a strong economy, modern infrastructure, universal education, digital innovation, and clean environment all in one mission. ये एक राष्ट्रीय दृष्टि है जो भारत को पूरी तरह विकसित बनाने का लक्ष्य रखती है. Main objectives of Viksit Bharat 2047. Become a top 3 global economy. Increase GDP, attract FDI, and make India a global trade hub. भारत एक मजबूत और तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी बन जाए. Quality education skill development. Make learning future ready through digital tools, NEP 2020 and vocational training. सबको अच्छी शिक्षा और कौशलों की ट्रेनिंग माए. Universal health care. Accessible, affordable and modern hospitals for every citizen. हर नागरिक तक स्वास्थ्य सुविधा पहुंचे. World class infrastructure. Smart cities, express highways, bullet trains, and 100% digital connectivity. विकसित भारत का निर्माण सुदृढ़ इंफ्रास्ट्रक्चर से होगा. Clean energy environment protection. Focus on solar power, hydrogen energy, and pollution control. स्वच्छ भारत और हरित भारत दोनों साथ साथ बढ़े. Innovation technology leadership. Develop cutting-edge tech in AI, robotics, space and digital economy. डिजिटल भारत बनाने की दिशा में बड़ा कदम. Good governance, strong institutions. Transparent government, digital services and citizen-first approach. प्रशासन को डिजिटल और अकाउंटेबल बनाना. 4 pillars of Viksit Bharat 2047. Economic growth. Boost manufacturing, startups and exports. भारत की इकोनॉमी दुनिया की टॉप 3 में आए. Social inclusion. Development for all, especially women, youth and backward communities. सामाजिक न्याय और समावेशी विकास. Environmental sustainability. Balanced development with clean air, water and forests. पर्यावरण का रक्षण और विकास एक साथ. Good governance. Digital India, citizen services and strong institutions. लोकतंत्र में जन भागीदारी और ट्रांसपेरेंसी. Major government missions behind it. Digital India, digital access for every Indian. Make in India, boosting manufacturing. Startup India, supporting young entrepreneurs. Skill India, youth को जॉब रेडी बनाना. गति शक्ति योजना, इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी. ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, फ्यूचर क्लीन एनर्जी. NEP 2020, न्यू एजुकेशन पॉलिसी फॉर अ मॉडर्न भारत. Why Viksit Bharat 2047 is important? To eliminate poverty and unemployment. To make youth skilled and job ready. To ensure equal opportunity and justice for all. To make India a global superpower. To protect nature and climate while growing. विकसित भारत सिर्फ एक गवर्नमेंट प्लान नहीं बल्कि हर भारतीय का सपना है. एग्जाम टिप. Q. What is Viksit Bharat 2047? Explain its key goals and importance. Answer format. Start with the definition. Mention the 4 pillars. Name the government schemes. Explain the benefits. End with a conclusion. Conclusion. Viksit Bharat 2047 is not just a dream, it's a mission to transform India into a strong, developed, and inclusive nation. If we work together, students, youth, government, and citizens, this vision can become a reality.
This topic is very important for B.com, UPSC, SSC, RAS banking and interview preparation.